Hello everyone, welcome to Study Capital YouTube platform. Please confirm whether you can hear me so that we can start our discussion. Hello, good evening. Can you hear me? Let me just confirm on my own and then we'll start in a minute. Okay, perfect. Okay, so good evening again. Welcome to Study Capital YouTube platform. This is Atul Mishra, your mentor for CUET 2026 MA English program. We are solving some MCQs. In the last 2-3 live, I have talked about 2 units, British literature and literary criticism. I have also mentioned what are the things that you have to cover in order to prepare for your exam. And today, we will solve few MCQs. With the MCQ, I will suggest you some important points, some important things, areas that you can focus on while preparing for your CUET exam. So without any delay, let's start with MCQs. I'll be giving you 30 seconds to answer. I'll tell you things around the question that you can refer to, and then we will try to solve the question. Okay? Yes, the very first question is on your screen. I hope you can read it too. It says, which of the following statements about Dadaism is incorrect? Okay, so you might be knowing about Dadaism, a movement which happened around, in the modern period. Dadaism, Surrealism, Imagism, Harlem Renaissance, so many movements that were there from 1910 to 1920. And this question is particularly associated with a movement called Dadaism. And the question is, you have to find out which option is incorrect. So the first option says Dadaism emerged as an anti-establishment art movement during the Great War with early centers in Zurich and Berlin. This is the first option. The second option says Dadaist artists strongly opposed war, nationalism and violence, aligning politically with radical left-wing and far-left ideologies. The third option says key figures of the Dada movement included Pablo Picasso, Andre Breton, Max Ernst. The last option says Dadaists challenged traditional artistic norms and often embraced what we call absurdity, chance and satire in their works. Now you have 30 seconds to answer which of the following statement about Dadaism is incorrect. Now while you are thinking about it, I'll give you a little bit background of what Dadaism is actually. So you might be knowing about the modern period, and if you are prepared, if you are a paid student, during discussions of the modernism, I talked about a movement called avant-garde movement. Something new, something experimental needs to be done, right? And there are certain movements which were against the war. You know, there were poetries. For example, if I talk about a group called war poetry, this is something different from what the question demands. But if you remember war poetry, there were 2 kinds of representations. One is the celebration of the war. On the other side, you have the criticism of the war, right? Wilfred Owen and others writing, while Brooke was celebrating the war. So there were 2 aspects, but more or less the other foundational movements that we find, the avant-garde movement that we find during the modern period, such as Surrealism, especially in terms of what we call artistic movements, Dadaism, Cubism, Futurism, Expressionism, and the list goes on, right? You might be knowing about these groups as well. Some of them were what we call anti-establishment art. Why? Because we are moving away from traditional way of portraying art. We need something new, because the world in which we are living is, the peace is disrupted. We now need new ways of living, new ways of, talking about things, because there is war, there is a trauma that comes with the war, and you need to criticize this. So this movement actually started from Zurich, Dadaism. So this option is absolutely right.
And as you can see, because these are anti-establishment movements, so whatever is done by the establishment, government and all those things, they are going to neglect it, they are going to reject it. So they opposed war, the World War, the First World War, how many people died, violence, and there was no result of it. The idea of nationalism, it is sweet to die for your own country, as people like Horace said, we need to oppose it. The violence that comes with the World War, you need to oppose that as well. And all those things, who will do that? These are all left-wing politics, left-wing ideology, who is going to criticize this aspect. So this option is also right. Look at the D option. It says, Dadaists also challenge traditional artistic norms. So if you are challenging traditional artistic norms, think about the modern period, and before that, there was Victorian period. Victorian period, there was realism, there was a specific way of writing, right? Chronological order, that kind of a setup. But you are challenging that idea. That means you'll come up with what we call avant-garde movement. Avant-garde movement, and a lot of literary movements and artistic movements in the 20th century, in the first half of the 20th century, they were avant-garde movement. What they were doing, they were celebrating, embarrassing what we call absurdity, chance, and satire. So celebration of it, like you might have seen a lot of paintings from Surrealism and Dadaism celebrating what we call absurdity. So a lot of paintings related to that as well. So this option is also right. But look at the key figures. The options that are given here, you might be knowing about André Breton, a very famous person who wrote Manifesto of Surrealism. While preparing for this exam in our paid courses, I told you there is one very important person from Dadaism. Anyone who can tell me the name of the person? I can see some people responding as well. Tristan Tzara, very good. Tristan Tzara was the person who is the most important person in the Dadaism movement. How you remember? I told you one very interesting thing while we were preparing for this. I remember, just a second, when we were preparing for the postmodernism, I remember there was a discussion about it. There is a writer who wrote, Rosencrantz and Guildenstern are dead, and in that particular text, it's a very good example of theater of absurd. The same writer has also written a work where you find a character called Henry Carr, and he goes back in time and meets three important people. He meets Tristan Tzara during Dadaism, when he was preparing for Dadaism. He meets Lenin. There was a Bolshevik revolution going on, and he also met James Joyce while he was writing Ulysses. Three important people in history. Henry Carr goes back in time and meet three people. Anyone who can tell me the name of the play which I am talking about here? Anyone who can tell me the name of the play? Sanskar sir. Yes, okay, thank you. Okay, thank you. Yes, who can tell me the name of the work? Yes, the name of the author is Tom Stoppard. Can you tell me the name of the work where we have a character like this who goes back in time? The name of the protagonist is Henry Carr. He goes back in time and meet three people, very important people in history during 1910, and he also like people like Lenin, James Joyce, and Tristan Tzara. Three important people. Tzara during Dadaism, Joyce when he was writing Ulysses, and Lenin during the revolution, Bolshevik revolution that was going on. Who can tell me the name of the work? I commented. Yes, you have mentioned Tom Stoppard. I am asking you the name of the work by Tom Stoppard. Can you tell me the name of the work where we find this character roaming back in time and
If you don't know, then this is what you have to find in Tom Stupor. This is your question. Now moving ahead, I'll now talk about another question that we have for today. Without any delay, let's get back to that. And these are the important avant-garde movements that you'll find in the modern period. There is also what we call epic theatre. Bertolt Brecht, Piscator will be the people who will be associated with this form of theatre. It's a very new form of theatre that you will find in the modern period. How it's different? There is a thing called alienation effect. Alienation effect. Please read about it. We also call it as V effect. There are multiple names that are given to it, and it's an important movement in general. There are so many expressionistic texts, like for example, the hairy ape. The hairy ape, a test which is also prescribed in BHU UG, so it's an important for you for your examination purpose. There is imagism, where free verse will be used a lot. People like Ezra Pound, T. Hulme, and others will be part of this group. They'll come up with what called writing in free verse poetry. Famous groups, 1914 to 1918 will be the time frame in which they will also publish so many anthologies as well. Das anthologies is very famous. Then theatre of cruelty, theatre of oppression, cubism, and some other artistic forms as well, like futurism and others. Right, now coming back to the next question, look at the question, and again you have to find out which of the following statement about Ellen Showalter and her feminist literary criticism is incorrect. Now if you have any idea about feminism in general, first wave, second wave, third wave, fourth wave, and womanism, in today's live class we were talking about womanism, black feminism. Think about this question. Even if you don't know about Ellen Showalter, try to understand this, and I'll explain a lot of things related to this as well. Ellen Showalter categorized feminist literary criticism into three phases: the feminine phase, the feminist phase, and the female phase. So she talked about, there is a specific time that is given to these three ages, right? There was a time when women writers were trying to write like men. Think about what happened in Jane Eyre, right? There are types. Either women can be pure, angelic, or they can be villainous. And this is how men writers were portraying women. Women writers started writing and they started portraying the same kind of characters as well. That phase is what she called feminine phase. The second phase, where the woman will be radical, opposing men, right? So that will be the feminist model, opposing. And the third one is the female phase, where they're concerned with their own writing. They're either not imitating nor revolting against the men and writing about themselves, asserting their identity. There are specific time frame that is given to these three periods according to Ellen Showalter. So this is the right option. Look at the second option. It says in her work, Literature of Their Own, she argues that women's writing develops independently of male literary tradition. So there is a men and men, their way of writing. There's a woman way of writing, and it's a different from men way of writing. It develops independently is what the option is suggesting you. The third option says that she introduced the concept of gynocriticism, right? A criticism of female texts by female. Writings of female texts, gynotext written by women only, and gynocriticism, which focuses on the study of women's writing by examining their history, their themes, and linguistic patterns. The option says Showalter's feminist criticism aligns with French feminist theories of what we call écriture féminine, Hélène Sicot, the laugh of the Medusa, as seen in the works of Sicot and Irigaray. Now you have to find out which of the following statements about Showalter is incorrect here. I'm giving you 30 seconds. Think about it and answer it. It's very easy to do if you know a basic idea about, if you have read Peter Berry, and there's a section of feminism in Peter Berry which is divided into two parts, the French feminism and the Anglo-American feminism. You will find the difference, right? So I'll explain it to you. The option D is incorrect here, and we'll find how it happens, because Ellen Showalter is an Anglo-American feminist. You'll find the difference
The French feminism was so much interested in linguistics, in psychoanalysis, so that their theories will talk about language, like the way Helen Sicko talks about a creature feminine. On the other hand, Alan Showalter will be critical to this French feminist theory because their focus is so much on language and psychoanalysis and not on social approach and historical approach to feminism. So we need a literary approach that can align with social and historical aspect of feminism, not language oriented, not psychoanalysis oriented approach. So Alan Showalter was critical to that approach from French literary feminism. And if you read about this text called In Literature of Their Own, that was written by Showalter in 1977, as she mentions 3 different phases of moral. I told you, in one phase, women, when they started writing, they were imitating the men writers. Then came the time, then they were revolting against them. Then the last phase where they started asserting their own identity as if they don't care about men at all. This is the 3 different phases. Starting from 1840 to 1880, think about the works like Jane Eyre and all those which were written during this period. What women were doing, they were imitating the male literary tradition. Whatever the men were writing, whatever the way they were writing, this is how they have responded to that. The second is the feminist phase, where women started protesting against the men. That too from 1880 to 1920. Think about Alan Showalter, A Vindication of Rights of Women, which was written in between somewhere around 1798, but it created a movement in 1840s, and in 1880s and 1890s you'll find a lot of texts which were against the male literary criticizing men writings and advocating for equality. This is what we call feminism, the second dominating movement that will be there when first wave of feminism started. We have a lot of literary texts talking about equality and all those things, not imitating the men, against the men. Then came the third phase, which we call after the 1920s, after the what we call when women got their right to vote. And you'll find that women created their own literary tradition. They're not concerned with either imitating or criticizing the men. They started their own tradition. They started exploring female identity and experience without defining themselves in relation to men. So these are 3 different phases. This is also very important, but when we'll read, for example, Toril Moi's text called Sexual and Textual Politics, she will also define these 3 phases. What is female, what is feminist, and what is feminine. It is for you to go back and read the first passage of Peter Berry. It defines you what, according to Toril Moi in Sexual and Textual Politics, is related to female phase, feminist phase, and feminine phase. Okay, let me ask the team. Sir, कुछ माइक का इशू आ रहा है, सर की आवाज आ रही बोल. But it's fine for me. Like I can hear it on my phone and there is some voice in the background. हल्का हल्का voice आ रहा है, सर ऐसे करके. Is it because of the mic? Just a second, let me check it for one. Just a second. Yes, it's better now. Thank you. Okay. So 3 different phases that Alan Showalter will also talk about. Now you need to understand that she'll be talking about the own tradition, women coming up with their own tradition. That is why she'll coin the term called gynocriticism or gynotext or androtext. Gynotext means text written by women. Gynocriticism is criticism of those texts by women only, right? Women's experience cannot be located, criticized, justified, judged by men. So it is women who need to come and contribute to their criticism. That is what we call gynocriticism as well. On the other hand, the French feminism like Helen Sicko, Erigri, Kristeva का semiotic model आपने पढ़ा होगा, Erigri का bodies that matter पढ़ा होगा, Helen Sicko का laugh of Medusa पढ़ा होगा. Their discussion is about language.
men-made language. For example, Spender wrote a text and Seco said women must write through their bodies, although there is a criticism of it as well because it is an essentialist approach, right? When you say must write with their body, who is going to decide why they should write with their own? The only possible way is to write their body through their body is problematic. So language, semiotics, that is the whole point of French feminism. But Showalter was against this approach. She wanted a very historical, social analysis type of approach. That is why she came up with this concept of gynocriticism. Now look at the next question. Okay, so there are 4 terms, as you can see: uncanny, parapraxis, collective unconscious, the name of the father. You might be knowing by now that this is a question from psychoanalysis. 4 very important terms that you find in psychoanalysis: 2 by Freud, 1 by Carl Jung, 1 by another psychoanalyst. Now look at the definitions. The first option says the part of the unconscious mind that contains inherited universal archetypes shared by all humans. This is option number 1. Option number B says a linguistic and symbolic structure that enforces social law and authority, shaping an individual's identity. The C option says a strange or eerie feeling arising when something familiar becomes unfamiliar, evoking repressed fears. And the D option says a slip of the tongue, memory or action that reveals unconscious thoughts or desires. Now these are the 4 options. You have options A, B, C, D in front of your screen. Now I am giving you 30 seconds to answer this question, and then I will explain what needs to be explained here. Yes. Okay. Yes. So there is one response in the chat box. Let me explain this question to you first. As you can see, there are when we were having this class on YouTube as well a month before, there was one video that I made on a question that was asked from psychoanalysis in CUET PG examination. In that video, I talked about all these terms. So those of you who were there in that video, it will be a very easy question for you. Those of you who are not, let me give you a solution to this question. The uncanny is that kind of a feeling, as someone has also responded, a very eerie feeling when something familiar becomes very unfamiliar, evoking repressed fears. There will be discussion about it in Freud's theory as well as in the ideas of Kristeva. So if you have read Julia Kristeva, someone who coined the term intertextuality, someone who coined the term like abject, she also talks about this feeling of uncanny. Suppose if someone dies in the family, what kind of feeling that you have? You can't describe it in words, you can't describe it with something which is very familiar but also very unfamiliar at the same time. You evoke repressed fear, right? You have a fear that your parents, there is something that there will be a time when there will be no more, and that kind of a feeling is very unsettling, very eerie, and that is what we call uncanny. The second word is of parapraxis. In other term, we call it slip of the tongue. This is last year's question in CUET exam, slip of the tongue. Unconscious reveals itself through slip of the tongue. Collective unconscious. Collectively, a lot of things that are archetypes are there in our unconscious mind. Carl Jung talks about it. That is the part of the unconscious mind that contains inherited universal archetypes. Agar main bolu water, so we all know
अनकॉन्शियसली हमारे दिमाग में वाटर का जो आर्केटाइप है ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, हमको पता है कि वाटर क्या सिंबलाइज करता है, मदर क्या सिंबलाइज करती है। दीज आर द कलेक्टिव आर्केटाइप्स, यूनिवर्सल आर्केटाइप्स जो हम सब लोग जो है all human beings share together. So this is what we call collective unconscious. Now when you lead the second branch of psychoanalysis that started somewhere around 50s 60s, अगर आपने मिरर स्टेज थ्योरी पढ़ा हो, मिरर स्टेज डेवलपमेंट पढ़ा हो, वहां पे आप द नेम ऑफ द फादर, दैट मीन्स अथॉरिटी, ये वाला कॉन्सेप्ट जो है आप पढ़ते हैं। सो ये ऑप्शन नंबर आपको दिख रहा होगा, दैट स्ट्रक्चर a symbolic as well as linguistic, जो symbolic स्टेज में आता है in mirror stage theory, which enforces law and authority. Father enforces law, father enforces authority, and that is how individual shapes their identity. In psychoanalysis, in the second branch of psychoanalysis, when you will be reading, when you will move beyond Carl Jung and Freud and reading some other theorists, anyone who can tell me who came up with the idea of mirror stage, he also talks about the idea of the name of the father there. So 4 important terms from psychoanalysis. Okay, now I already talked about uncanny, parapraxis, collective unconscious, the name of the father, Laka. In his accurates, the lectures that he gave in the mirror stage development, he talked about this name of the father argument. Okay, look at this question. Very interesting, 4 different words, terms and definitions to them. Okay, the first option says, the first question says transnationalism. These are all diasporic terms. Transnationalism. Second says double consciousness. Third says creolization, and fourth says deterritorialization. Okay, these are 4 terms from diaspora studies. Diaspora is one unit in the CUET PhD examination. So these are 4 terms associated with that, and the options are the process by which migrants maintain connections, identities, activities across multiple nations, blending cultures and economics. Suppose if someone is going from India to America, they are preserving both their cultures, they are maintaining relationships across these 2 lands, making identities, activities across multiple nations. This is one option, what we call out of these 4 terms. The second is a term describing the divided self-perception experienced by diasporic individuals, feeling torn between 2 cultural identities. You are no more completely associated with the modernism, with the hometown, and you're not at all completely able to associate with the host land. That kind of a feeling, your identity is split between 2. Remember when we were talking about Harlem Renaissance, there was a person called Du Bois who coined this term, which is the answer for option number 2. Third option says the process of cultural mixing and adaptation that results in new hybrid identity seen in post-colonial societies. What happens when the people from different cultures, they merge together, they live together, the culture of them, it eventually merge with each other. So the people, for example, living in cosmopolitan places will be celebrating different kind of functions. They'll be celebrating Diwali as well, they will be celebrating Halloween as well. जब अलग-अलग culture के लोग साथ में रह रहे हो, mix हो जाए सबका. Language में भी हमने एक term वैसा पढ़ा था कि जैसे for example हमने पिडगिन पढ़ा था, आइडोलेक्ट पढ़ा था, डायलेक्ट पढ़ा था, वहीं पे इस टर्म के बारे में भी पढ़ा था, मिक्सिंग ऑफ लैंग्वेज एंड मिक्सिंग ऑफ कल्चर, वैसा ही कुछ है. फोर्थ ऑप्शन, द वीकनिंग ऑफ द लिंक बिटवीन पीपल एंड देयर ओरिजिनल जियोग्राफिक होमलैंड बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, माइग्रेशन और डिजिटल कनेक्टिविटी. इट्स self-explanatory that people lose their connection with their original homeland. Why? Because there's a globalization world, you can connect with people across countries, migration, and there's a digital connectivity possible. Because of that, you can't associate themselves with each other. So I think it's a very easy question to solve, because if you know this term itself, it will be a very easy thing to answer. Right? I hope you know by now, when we call, for example, mixing, cultural mixing and adaptation, new hybrid identities, we talked about Creole language as well, which is also a mixture of language, and in terms of culture we call it creolization. You might have read about African creolization, it's a very famous thing. Then look at the term divided self-perception, 2 identities. We talked about in the black identity, you are not only American or African, you are also black. That comes with a new split in your identity. Du Bois coined the term called double consciousness.
and if you are maintaining connections between two different cultures at the same time, two different nations at the same time, that is what we call transnationalism. Trans means in between, nationalism two different cultures and maintaining relationship between each other, and deterritorialization मतलब आप अपनी territory से दूर होते हुए जा रहे हैं, which is option number D here. Okay, now moving ahead, I already talked about it in great detail, so I'm not gonna discuss it in detail. Look at the next question. It is a question for Marxism, 4 different terms for Marxism and who coined them, who found them. The first one is reification, the second one is alienation, the third one is base and superstructure, the fourth one is false consciousness. 4 different codes and terms, and who coined them. Who coined Karl Marx coined which term here? George Lucas coined which term? Karl Marx and Friedrich Engels together coined which term? And Friedrich Engels alone coined which term? This is a question. Look at the options. A, B, C, D is on your screen. You have 30 minutes to solve it. So 30 seconds for you, and then I'll try explaining this question and also the options. This is a class for CUET PG English literature, MA English program. If you have read Marxism, you know class disparity, all those things, base determining our superstructure. These are all basic terms. Even how labor is reduced from their own work that they are doing, alienation, how the labor is alienated. We talk about these things in Marxism. So very common thing in Marxist studies. No responses yet, no issues. First, I'll explain these terms to you. Remember, the very first term was from George Lucas called reification. I'll explain it to you. It says the process by which social relations are objectified and treated as things rather than human-made structure. Suppose if there is a working class person and there is another person who is a master, the relationship between them should be of human-like, right? You should take care of their emotions, you should take care of their feelings, the problems that they have. But it is not working in that way. What happens? The working class is reduced to just a labor. So they are fruitful if they can produce labor. They are not of use if they are unable to produce the kind of labor that is expected from them. So men is reduced to their fruitfulness, to their usefulness, and that is how reducing what we call the relationship between the human beings. So the process through which it happens, where relationships are objectified and treated like things rather than human-made structure, is what we call reification, the term which was coined by George Lucas. For example, in capitalism, a worker is treated as just another resource rather than a human being. Think about what happens in in big industries. So if you are unable to work, if you are ill and you are unable to go to the industry to work for 3 days, you will be removed from your job. Someone else will be replacing you. So there is no human interaction, there is no human relationship at all. That is what we find in capitalism as well. It is all about money. The second thing is alienation. Suppose there is a one person who can do hard labor a lot, but he has no money. And then there is one person who has all the money, but he does not want to have that kind of a workload in front of him. So what happens? You will find that the workers, the estrangement of workers from their labor. एक labor एक industry में काम कर रहा है, he will be producing things of lakhs. Suppose अगर आप think about any industry, कोई भी industry दिमाग में सोचिए, दिन भर labor काम करते हैं, लाखों का सामान बनाते हैं. At the end of the day, they'll only be getting what we call 200 rupees, 300 rupees. So what happens? They are estranged from their, from the production that they have done. The estrangement of workers from their labor, products and themselves because of the capitalist production. You can prepare a lot of things, but you'll only be getting 30 rupees, 100 rupees, 300 rupees, whatever is the price. So you are reduced only as a servant, as a labor. Your value is of labor, and the kind of production that you'll be doing, you'll be removed from that. Is what we call
alienation. For example, a factory worker assembling parts all day, he has no connection to the final product at all. He's just making the thing, there is no connection between them, so you're alienating him from the labor that he's producing. The third one is very famous, base and superstructure. For example, this idea was given by Karl Marx, so you also need to remember. But the base and superstructure is a model which you find by Marx and Engels. They collaborated. We know Das Kapital, Economy, and many texts that they have written in collaboration, Friedrich Engels and Karl Marx. They talked about these two terms, base and superstructure. Base is economics, superstructure is the product of it. Suppose if you have, if you belong to a upper class family, you have a lot of money, then your superstructure will be strong. You'll be reading in a good school, you'll have a good hospital facility. If you don't have that kind of a money, your superstructure will change. So what Marx suggested and Engels suggested, that base determines your superstructure. Your economic base, your money, your modes of production will determine the superstructure, the legal, political, cultural aspect of your society. The term which was coined by Marx and Friedrich Engels together. Then false consciousness. This is Friedrich Engels' term, which suggests that the way the working class is misled into believing in capitalist ideology and acting against their own interest. होता क्या है कि जब आप ऐसी आइडियोलॉजीज को सपोर्ट करने लगते हैं जो आपके ही अगेंस्ट है पर आपको पता नहीं है, तो यू आर लिविंग इन अ कैपिटलिस्ट वर्ल्ड वेयर वर्किंग क्लास स्टार्टेड सपोर्टिंग दोज ideologies which are created by the capitalist society itself for their own benefit. You don't know कि ये आपके against है and you start working for them. So that is a false consciousness, a term which was coined by Friedrich Engels. There are many other terms. I'm just giving you the names: historical materialism, ideology, कल्चरल हेजिमनी. ग्रामसी में आपने पढ़ा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है. एक रूलिंग क्लास मेंटेन करती है पावर को नॉट जस्ट थ्रू कोअर्सन, जरूरी नहीं है फोर्सफुल, बट आपकी आइडियोलॉजी के ऊपर डोमिनेट करके उनकी आइडियोलॉजी नेचुरल हो जाती है एंड वी स्टार्ट फॉलोइंग इट, इज व्हाट वी कॉल कल्चरल हेजिमनी. इंटरपलेशन, अल्थ्यूजर विल कॉइन द टर्म, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आप देखते होंगे कि अगर कोई मेल चाइल्ड है तो उसको बचपन में कार गिफ्ट की जाएगी. इफ देयर इज अ फीमेल चाइल्ड, उसको डॉल गिफ्ट की जाएगी. किस तरीके से सोसाइटी में इन आइडियोलॉजी को फिक्स किया जाता है उनके सोशल रोल्स के, उसको हम इंटरपलेशन बोलते हैं. अल्थ्यूजर का टर्म है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आता है. कमोडिटी फेटिज्म मार्क्स ने कॉइन किया था. ऐसे और भी बहुत टर्म्स हैं, लुम्पेन प्रोलेट, एलिनेशन, एंड द लिस्ट गोज ऑन. सरप्लस वैल्यू, RSA and ISA, repressive state operators and ideological state operators by Louis Althusser, right? Dialectical materialism by Marx, false consciousness by Friedrich Engels, organic and traditional intellectuals by Gramsci, contradictions by Marx, mode of production by Marx, and the list goes on. तो बहुत कुछ है. We can't discuss everything here on live class, so I'll be moving ahead and we'll be talking about one more question here. Look at this question. You have to match them following 4 works and authors: Raymond Williams, Stuart Hall, E.P. Thompson, Richard Hogarth. 4 important people in BCCC, Birmingham Center for Contemporary Culture Studies. Those of you who were my class students, we talked about it in culture studies section when I was talking about Rolla Barthes and others, and how it led to Homi K. Bhabha and others, and we were discussing post-colonialism. There I talked about these 4 people, very important in what we call BCCC, Birmingham Center for Contemporary Culture Studies, in 1964. Hogarth was the one who coined, who started this, and then Stuart Hall followed it. E.P. Thompson was there, Raymond Williams was there. We talked about so many works from these people, important people in history of culture studies, and you have to tell the name of the works. Culture and Society. You might have read Culture and Anarchy, a text which inspired this writer to write Culture and Society. Culture and Anarchy by none other than Matthew Arnold, a Victorian writer. Encoding and decoding in the media discourse. Think about 3 types of readings. The dominant reading, as it is, आप जो चाहता है वही चीज को आप पढ़ लेते हो. एक तरीके से इनकोड किया गया मीडिया में और एग्जैक्टली आपने उसी तरीके से उस मीनिंग को उठा लिया. डोमिनेंट रीडिंग. निगोशिएटेड रीडिंग, आपने कुछ पार्ट उठाया, कुछ पार्ट को निगोशिएट किया कि ये ठीक है पर कुछ चीजें गलत है. और तीसरा अपोजिशनल, कंप्लीटली अपोजिट रीडिंग करना व्हाट इनकोड किया गया.
This is what we have read in encoding and decoding of the television discourse. The making of the English working class, discussion about history for the working class point of view, and the uses of literacy. मास ये जो अमेरिकन पॉपुलर कल्चर है उसका ब्रिटिश वर्किंग क्लास कल्चर पे कितना खराब इफेक्ट पड़ा है उसका डिस्कशन करते हुए ये पहला टेक्स्ट है जो कल्चर स्टडीज में हमने पढ़ा था. कैन यू टेल मी द नेम ऑफ द राइटर्स हियर? किसने कौन कौन सा काम जो है वर्क जो है वो लिखा है? नाउ लुक एट द ऑप्शंस. समवन इज सेइंग बी. बी मींस रे ए का 1 कल्चर सोसाइटी, स्टुअर्ट हॉल इनकोडिंग डिकोडिंग, E.P. Thompson making of the working class, and Hogarth use of literacy. Very good. These are the 4 important, I told you, 4 major texts from BCCC extension of Marxist idea. Now I'll just write down 2-3 terms here and you have to tell me who coined them. A structure of feeling, something that I mentioned in the classroom multiple times, very important term for your CUET PG examination for now. A structure of feeling. Who can tell me who coined this term? A structure of feeling. There is a person, ये जो 4 लोग हैं इन्हीं में से कोई है जिसने structure of feeling term को coin किया है, right? जो आपके lived experiences होते हैं, जो आर्ट में रहते हैं, लिटरेचर में रहते हैं, लेकिन गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में नहीं रहते हैं. जैसे women are sad, they are living a relational life, they are not happy, their experiences are not good. That is what women can feel in the Victorian period, but we don't have any movement for that yet. But we do find these characters who are feeling that way in literature. That is what we call structure of feeling, जिससे resistance जो है possible होता है. ऐसा feeling, ऐसा emotion जो कोई character, कोई इंसान feel कर पा रहा है, पर lived experience है उसका, जो हम art में पा रहे हैं, literature में पा रहे हैं, पर documented government fonts में हम उनको नहीं पाते हैं. Very good. It was Raymond Williams who coined that term. Very, very important. Great. Look at the another question. BCCC and all those things we already talked about, so I'm moving ahead. Now there is a list of 4 awards, okay, and there is a description कि क्यों ये अवार्ड दिया जाता है, किस जॉनरा में दिया जाता है, ऐसा करके ये क्वेश्चन है. बहुत एक्चुअली इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आते रहे हैं. 4 अवार्ड्स है. ह्यूगो अवार्ड, नॉस्ट इंटरनेशनल प्राइज फॉर लिटरेचर, इंटरनेशनल बुकर प्राइज एंड सुल्तान पद्मश्री अवार्ड. राइट. अगर शायद आप 1-2 अवार्ड का नाम सुना भी होगा आपने, किसको मिला है, बहुत पॉपुलर रहता है. कोशिश करिए ये जानने की कि ये अवार्ड किस फील्ड में या किस काम को करने के लिए मिलता है. लुक एट द ऑप्शंस. पहला ऑप्शन है ये एक बाई एनुअल लिटरेरी अवार्ड है जिसको अमेरिकन नोबेल भी बोलते हैं. ये बहुत यूनिक है. क्यों? बिकॉज इट इज जस्ट बाई फेलो राइटर्स रेदर देन क्रिटिक्स और एकेडमिक्स, इंश्योरिंग अ फोकस ऑन आर्टिस्टिक मेरिट ओवर कॉमर्शियल सक्सेस. यानी कि आपका टेक्स्ट की किताबें बहुत बिकी हैं, वो क्राइटेरिया नहीं है आपको अवार्ड देने का. आपकी आर्टिस्टिक एलिमेंट कितना स्किलफुल आपका वर्क है, उस बेसिस पे ये अवार्ड दिया जाता है. और कोई कोई क्रिटिक या एकेडमिक से अवार्ड नहीं देता है. दूसरे राइटर्स ही जो आपके साथ लिख रहे हैं वो सिलेक्ट करते हैं कि ये वाला अवार्ड इस राइटर को मिलना चाहिए. दैट इज ऑप्शन नंबर ए. ऑप्शन नंबर बी सेज द प्रेस्टिजियस अवार्ड विच एस्टैब्लिश्ड इन 1953 में एक अवार्ड शुरू हुआ जो स्पेकुलेटिव फिक्शन में दिया जाता है. ये आपके सिलेबस का पार्ट है. आपने एक यूनिट देखी होगी स्पेकुलेटिव फिक्शन, साइंस फिक्शन का एक्सटेंशन, जो आपके जॉनरा वाइज जो आपका सिलेबस है उसमें मेंशन है. तो ये स्पेकुलेटिव फिक्शन का अवार्ड है जो 1953 में स्टार्ट हुआ, जिसमें साइंस फिक्शन के टेक्स्ट भी एडेड है, फैंटेसी के भी टेक्स्ट एडेड है. मल्टीपल कैटेगरीज में दिया जाता है, जैसे नॉवेल को भी दिया जाता है, शॉर्ट स्टोरीज को भी दिया जाता है, नॉवेलर्स को भी दिया जाता है. मेंबर्स होते हैं जो इस अवार्ड को सिलेक्ट देते हैं. दिस इज द ऑप्शन नंबर 2. ऑप्शन नंबर 3 सेज दिस लिटरेरी अवार्ड रिकॉग्नाइजेस आउटस्टैंडिंग वर्क ऑफ ड्रामा. तो ये तीसरा अवार्ड जो है वो केवल ड्रामा में दिया जाता है. इंग्लिश में लिखे होने चाहिए, इंडियन प्ले राइट के द्वारा लिखा होना चाहिए, और जो इंडियन कल्चर से रिलेटेड या इंडियन सोसाइटी से रिलेटेड थीम होनी चाहिए वर्क की. और एक बहुत फेमस प्ले राइट थे, उन्हीं के नाम पे इसका अवार्ड का नाम भी रखा गया है. इंग्लिश लैंग्वेज थिएटर इन इंडिया में ये डेडिकेटेड है. आप जानते हैं बहुत कम लोग हैं जो इंग्लिश में लिखते हैं, तो बहुत कम लोग भी होंगे जिनको ये अवार्ड दिया गया होगा. 4th नंबर ऑप्शन है कि अनलाइक इट्स काउंटर पार्ट रिकॉग्नाइजिंग अ सिंगल नॉवेल, दिस इंटरनेशनल लिटरेरी प्राइज
रिवॉर्ड्स द बेस्ट ट्रांसलेटेड वर्क ऑफ फिक्शन। तो इसी का ये जो अवार्ड है, इसी का एक और अवार्ड है जो केवल इंग्लिश वालों को दिया जाता है, पर ये अवार्ड ट्रांसलेटेड वर्क को दिया जाता है, जिसमें ऑथर को भी मिलता है और ट्रांसलेटर को भी ये अवार्ड मिलता है। पहले जब ये अवार्ड स्टार्ट किया गया था तो केवल ऑथर को मिलता था। 2016 से इन्होंने चेंज किया और ऑथर प्लस ट्रांसलेटर दोनों को ये अवार्ड जो है वो दिया जाने लगा। अब आपको बताना है कि ये ऑप्शन जो है, ये जो वर्क है वो किसका है, ये अवार्ड जो है वो कौन सा अवार्ड है। नाउ लुक एट द ऑप्शंस A, B, C, D in your on your screen. I hope you can, is it visible to you as well? Tell me the answers. You have 30 seconds to respond. देखिए इस तरीके से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। किसको अवार्ड मिला है वो तो आपको जानना होता है, आप पढ़ते रहते हो कि आज हम क्लास में पढ़ रहे थे टोनी मॉरिसन को पुलित्जर प्राइज मिला है, हमने अपार्थाइड लिटरेचर को पढ़ा, हमने गोडाइमर को पढ़ा, हमने एलन पैटन को पढ़ा, बहुत सारे चिनु अचूबे को कल हम क्लास में पढ़ रहे थे, थियांगो को हमने क्लास में पढ़ा था। आप राइटर्स पढ़ते रहते हैं, वोल्साइनका को पढ़ा था, पहले सब सहारन थे जिनको नोबेल प्राइज मिला था। क्या होता है हमको पता है किसको क्या अवार्ड मिला, ये अवार्ड किस लिए दिया जाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। आपके में स्पेसिफिक जॉनराज अवेलेबल हैं, उन जॉनराज की स्पेसिफिक अवार्ड्स भी है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, एक अवार्ड है जो बहुत फेमस है, इसमें मेंशन नहीं है, फिलिप के डिक अवार्ड। फिलिप के डिक एक राइटर थे, बहुत फेमस टेक्स्ट है उनका, आप जानते होंगे, और स्पेसिफिक जॉनरा में वो लिखते थे। ये अवार्ड भी उसी जॉनरा की बेस्ट राइटिंग के लिए दिया जाता है, राइट। ऐसे बहुत से इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हो सकते हैं। देखिए पहला तो जो आप यहाँ से आंसर देंगे, इंडियन ड्रामा में आपने शायद सुल्तान पद्मश्री अवार्ड पढ़ा होगा। अगर आप पेड स्टूडेंट हैं तो मैंने आपको 2 टेक्स्ट बताए थे जिनको सुल्तान पद्मश्री अवार्ड मिला है। अगर आप पेड स्टूडेंट हैं तो उसका नाम जरूर यहाँ पे बताइए, ठीक है। एक गुरचरण दास का वर्क था, मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, क्योंकि इंग्लिश में लिखे हुए वर्क को मिलता है। आपको पता है कि इंग्लिश में साहित्य अकेडमी अवार्ड विनर हमारे इंडिया से महेश दत्तानी है, लेकिन महेश दत्तानी को ये अवार्ड नहीं मिला है। तो ये तो आपको बिल्कुल जानना चाहिए कि और किसको मिला है, क्योंकि जो फेमस राइटर है उनको नहीं मिल रखा है। तो ये कौन है जिनको सुल्तान पद्मश्री अवार्ड मिला है, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। दूसरा, जब आप ये देखेंगे तो ये इंटरनेशनल बुकर प्राइज की बात हो रही है, क्योंकि इंटरनेशनल बुकर प्राइज जो अवार्ड है वो बुकर प्राइज का एक एक्सटेंशन है जो ट्रांसलेटेड टेक्स्ट को दिया जाता है, राइट। अलग लैंग्वेज में लिखे गए और फिर उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया। पहले केवल ऑथर को मिलता था, अब ऑथर और राइटर दोनों को मिलता है। ये एक ऐसा राइटर है, ये जो अवार्ड है ये स्पेकुलेटिव फिक्शन में हुगो अवार्ड मिलता है। तो ये तीनों आप अगर आंसर कर देंगे तो चौथा वाला आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, दैट इज नॉस इंटरनेशनल प्राइज फॉर लिटरेचर, जो पहला वाला अवार्ड है, जिसको हम अमेरिकन नोबेल अवार्ड भी बोलते हैं। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन हो जाएगा अगर आप चीजों को समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आपके में एक यूनिट है जिसको हम बोलते हैं लाइफ राइटिंग। नाउ ये बहुत इजी क्वेश्चन होना चाहिए, आई बिलीव। लाइफ राइटिंग में भी मल्टीपल टाइप्स की लाइफ होती है। जैसे आप किसके बारे में लिख रहे हैं, आप खुद की लाइफ के बारे में लिख रहे हैं, आप अपने फ्रेंड की या अपने किसी जान पहचान के इंसान की लाइफ के बारे में लिख रहे हैं, आप एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम में अपनी लाइफ के बारे में लिख रहे हैं, आप किसी स्पेसिफिक इवेंट के बारे में किसी दूसरी की लाइफ के बारे में लिख रहे हैं, आप मिक्स कर रहे हैं फिक्शन के साथ में ऑटोबायोग्राफी के एलिमेंट्स को। तो अलग अलग तरीके से बायोग्राफिकल इंफॉर्मेशन को लिखा जा सकता है, लाइफ राइटिंग को लिखा जा सकता है। तो ये लाइफ राइटिंग के 4 डिफरेंट फॉर्म्स हैं और डेफिनेशंस दी हुई हैं। आपको बताना है कि कौन सा डेफिनेशन किस फॉर्म ऑफ राइटिंग के लिए मीट करता है। जैसे मेमोआ, बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, ऑटोफिक्शन। ऑप्शंस क्या है? अ फर्स्ट पर्सन नरेटिव इन विच एन ऑथर रिकाउंट्स स्पेसिफिक एक्सपीरियंस और अ पार्टिकुलर फेज ऑफ देयर लाइफ, यानी कि ये क्रोनोटॉप से मर्ज है। क्रोनोटॉप मीन्स एक स्पेसिफिक टाइम एंड स्पेस, कि ये पूरी लाइफ की स्टोरी नहीं है। हो सकता है कोई आप चाइल्डहुड की स्टोरी हो सकता है एडल्टहुड की स्टोरी हो सकता है कि किसी एक स्पेसिफिक इवेंट की स्टोरी हो। एक स्पेसिफिक एक्सपीरियंस के बारे में जब लिखी जाती, लाइफ के बारे में लिखा जाता है फर्स्ट पर्सन में, यानी जिस पर्सन की स्टोरी है वही लिख रहा है ऑथर, उसमें इमोशन है, पर्सनल रिफ्लेक्शंस है,
इंटायर लाइफ नहीं कवर की जा रही है, केवल एक इवेंट, एक स्पेसिफिक एक्सपीरियंस को कवर किया जा रहा है। तो इस फॉर्म ऑफ लाइफ राइटिंग को क्या बोलते हैं? सेकेंड ऑप्शन है अ लिटरेरी फॉर्म दैट ब्लेंड्स रियल लाइफ एक्सपीरियंस विद फिक्शनल एलिमेंट, यानी कि फिक्शन एंड बायोग्राफी दोनों को मर्ज कर देते हैं। तो प्रोटैगनिस्ट इज ऑफन अ वर्जन ऑफ द ऑथर, जो हीरो है आपका स्टोरी में वो ऑथर ही है, लेकिन जो इवेंट्स है, कैरेक्टर्स हैं, डायलॉग्स हैं, उनको अल्टर भी कर दिया जाता है, इमेजिन भी किया जा सकता है, यानी कि फिक्शनल भी बनाया जा सकता है। खुद ही की राइटिंग है लेकिन उसको फिक्शनल भी बना दिया। क्यों यूज करते होंगे? याद करिए, आप अपनी इमेज को ठीक कर सकते हैं, आप अपने बारे में लिखिए। हमने आई थिंक इन माई क्लासरूम आई गेव यू एग्जाम्पल ऑफ दिस मूवी Sanju, and how these movies are created so that your own image can be rectified. So it's very simple to that, fiction and reality merged together. Second is a detailed, third option is a detailed account of entire life of a person from birth to death or the present if the person is living, written by the person themselves, usually in chronological order and covering significant events. So suppose if बर्थ से लेके 0 साल से लेके कोई इंसान 70 साल तक जिया या जी रहा है अभी, और वो पूरी हिस्ट्री उसकी लाइफ की सब आपकी इस लाइफ राइटिंग में कवर हो जाए, इसके लिए कौन सा टर्म है वो आप देखेंगे। और फोर्थ ऑप्शन है एक इंसान का फैक्चुअल अकाउंट उस पर्सन की लाइफ का, लेकिन वो खुद नहीं लिख रहा है, कोई और उसको लिख रहा है, रिटन बाय समवन एल्स based on research, interview, documented evidence, provide an objective or interpretive perspective, यानी कि आपकी लाइफ की कहानी है लेकिन आप नहीं लिख रहे हैं, कोई और आपके बारे में लिख रहा है। 4 डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइफ राइटिंग। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर स्पेसिफिक एक्सपीरियंस की बात हो रही है, हम मेमोआ बोलते हैं, किसी एक टाइम फ्रेम से किसी को लिखा जा रहा है। रियल लाइफ एक्सपीरियंस को फिक्शनल से मेल कर दिया, ऑटो फिक्शन बोलते हैं, ऑटोबायोग्राफी प्लस फिक्शन, ऑटो फिक्शन। एक बहुत फेमस राइटर है जिनको अवार्ड मिला नोबेल प्राइज 2021 में, फ्रेंच से 23 में क्या कहते हैं फ्रांस से राइटर है, उनको ये अवार्ड मिला है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नो इश्यूज। देन पूरी लाइफ के बारे में है, बर्थ टू डेथ, खुद ही लिख रहे हैं तो ऑटोबायोग्राफी है, कोई और लिख रहा है तो बायोग्राफी है। बहुत आसान है इस क्वेश्चन को सॉल्व करना अगर आप इसको समझ पाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज के टर्म्स हैं, उनकी डिफिनीशंस हैं, और आपको फाइंड करना है कि किसने क्या डिफिनीशन है। बेसिकली एपिडर्मलाइजेशन, एपिस्टेमिक वायलेंस, निग्रिट्यूड, एब्रोगेशन, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। चारों के चारों टर्म्स पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज के बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। लुक एट द डिफिनीशंस। पहला ऑप्शन कह रहा है द प्रोसेस बाय विच colonized subject internalize racial inferiority as theorized by Fanon, particularly in black skin white mask। तो एक वर्क है फैनन का ब्लैक स्किन व्हाइट मास्क, आपको पता होगा हमने इसका चैप्टर नंबर 5 डिस्कस किया था, द फैक्ट ऑफ ब्लैकनेस। इसमें क्या होता है कि कोई ब्लैक इंसान क्या करता है, इंटरलाइज कर लेता है जो उसके अगेंस्ट प्रेजुडिसेस व्हाइट इंसान ने बनाई है, जो कि हम इंफीरियर हैं, व्हाइट मैन सुपीरियर है, इसको आप इंटरलाइज कर लेते हैं। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सेकेंड टर्म है द इरेजर और डिस्टॉर्शन ऑफ इंडिजिनस नॉलेज सिस्टम एंड वेज ऑफ नोइंग एज डिस्कस्ड बाय स्पिवॉक इन कैन द सबल्टन स्पीक। होता क्या है, एक तरीके का वायलेंस है जहां पे आपके नॉलेज को इंफीरियर, खराब बताया जाता है, और जो ऑब्वियसली जो कॉलोनाइजर्स हैं उनका नॉलेज अच्छा है, बेटर है, जैसे हमने मैकॉले का मिनट्स देखा था वैसा कुछ। तो ये इस तरीके के प्रोसेस को कैथरी स्पिवॉक ने क्या टर्म दिया है? तीसरा, एक लिटरेरी एंड पॉलिटिकल मूवमेंट दैट sought to reclaim black identity and cultural plight, initiated by thinkers like Césaire and Sarah Senghor। ये एक मूवमेंट हमने देखा था 1915 से 25 के बीच में, जहाँ पे ब्लैक आइडेंटिटी को रिक्लेम करने की बात हुई थी। बहुत से टेक्स्ट लिखे गए थे जो रिलेटेड थे हार्लेम रेनेसा से, और उसी को एक और टर्म बोलते हैं, एक और फ्रेज उसके लिए होता है जो यहाँ पे आप यूज करेंगे। और चौथा क्या है, रिजेक्शन ऑफ द इम्पोज्ड कॉलोनियल लैंग्वेज norms to assert cultural independence seem in post colonial literature challenging standard English। आप क्या कर रहे हैं, deliberately जो स्टैंडर्ड वे ऑफ राइटिंग इंग्लिश है जो ब्रिटिश हमको बताता है उसको हम चेंज करके अपने तरीके से इंग्लिश लैंग्वेज को यूज करें, यानी कॉलोनाइजर्स की लैंग्वेज को यूज कर रहे हैं बट इन आवर ओन वेज। जैसे चटनीफिकेशन आप पढ़ते हैं सलमान रश्दी में, कई सारी लैंग्वेज को मिक्स कर दिए, इंस्टेड ऑफ राइटिंग फादर
एज इट शुड बी योर राइटिंग पिता। बहुत सारे जो हमारे प्रोवर्ब्स हैं जो कि इंग्लिश में एग्जिस्ट नहीं करती है, उनको डायरेक्टली एज इट इज अपनी राइटिंग में यूज कर रहे हैं, यानी कि उन्हीं की लैंग्वेज उन्हीं के अगेंस्ट यूज कर रहे हैं बेसिकली। नॉर्म्स को, जो लैंग्वेज नॉर्म्स जो उन्होंने क्रिएट किए हैं उनको क्रिटिसाइज रिजेक्ट कर रहे हैं और फ्लूडिटी ऑफ लैंग्वेज को यूज कर रहे हैं। दैट इज 4 terms. I'll give you the names of the work. There's a work called The Empire Writes Back. Empire Writes Back, जहां पे ये टर्म कॉइन हुआ था एब्रोगेशन। ग्रिफिथ, टिफिन एंड अदर ने कॉइन किया था। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। क्या होता है जब आप लैंग्वेज को, उन्हीं की लैंग्वेज को रिजेक्ट करते हैं, दैट इज व्हाट वी कॉल एब्रोगेशन। निग्रिट्यूड मूवमेंट, हार्लेम रेनेसा में हमने पढ़ा था। क्या करते हैं इसमें, आप ब्लैक आइडेंटिटी को रिक्लेम करने की बात करते हैं। बहुत से टेक्स्ट आए थे, डबल कॉन्शियसनेस टर्म वहीं पे कॉइन हुआ था। एपिस्टेमिक वायलेंस, एपिस्टीमी जो फूको ने कॉइन किया था, नॉलेज फॉर्मेशन और उसके थ्रू वायलेंस करना, यानी कि अपने नॉलेज को इंपॉर्टेंट बताना और इंडिजिनस नॉलेज को खराब बताना। थर्ड वर्ल्ड वुमेन के कॉन्टेक्स्ट में गायत्री स्पिवक ने यूज किया था। और इंटरलाइज कर लेना अपनी रेशियल इंफीरियोरिटी को कि हम ब्लैक है इसलिए हम इंफीरियर है। इस प्रोसेस को फैनन ने डिस्कस किया था, जिसको हम एपिडर्मलाइजेशन बोलते हैं। बहुत से और टर्म्स पढ़े थे आपने, आपको याद होगा लैक्टिफिकेशन, जो भी यही चीज है, सिमिलर कॉन्सेप्ट है, उसी को हम एपिडर्मलाइजेशन भी बोलते हैं। तो ये 4-5 इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज में आप पढ़ते होंगे और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एक और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और फिर आज की क्लास को कंप्लीट करेंगे। लुक एट दिस क्वेश्चन, द वेल रॉट अर्न, प्लेजर ऑफ द टेक्स्ट, द मैड वुमन इन द एटिक, मार्क्सिज्म एंड लिटरेचर। दीज आर 4 टेक्स्ट, दीज आर द पब्लिशिंग ईयर मेंशन्ड हियर। आपको इन चारों टेक्स्ट का पब्लिशिंग ईयर बताना है, मैच करना है बेसिकली। क्यों इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको कई बार बताया है कि जब भी आप कोई भी थ्योरी पढ़ते हैं, लिटरेरी थ्योरी पढ़ते हैं, लिटरेरी थ्योरी का मतलब है आपके सिलेबस में कितनी थ्योरीज मेंशन है। आपने देखा होगा स्ट्रक्चरलिज्म मेंशन्ड है। स्ट्रक्चरलिज्म मेंशन्ड है मानी कि आपको इसके पहले के दोनों यूनिट फॉर्मलिज्म और न्यू क्रिटिसिज्म पढ़ना होगा। उसमें से कैसे स्ट्रक्चरलिज्म निकला वो आपको देखना होगा। फिर पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म देखना होगा, फेमिनिज्म देखना होगा, वो भी डायरेक्टली आपके सिलेबस का पार्ट है। जितने भी इज्म्स हैं जैसे मार्क्सिज्म है, फेमिनिज्म है, साइको एनालिसिस है, रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी है, ये कुछ थ्योरीज हैं और हर थ्योरी में आपको अराउंड 5 और 6 मेजर क्रिटिक्स मिलते हैं। उनके 5 और 6 मेजर टेक्स्ट होते हैं। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उनके पब्लिशिंग ईयर पूछे जाते हैं। जैसे क्लिंथ ब्रुक्स फॉर एग्जांपल न्यू क्रिटिसिज्म के एक इंपॉर्टेंट राइटर है। अगर आप न्यू क्रिटिसिज्म को जानते हैं, जिसको लेमन स्क्यूजिंग मेथड बोला था टी.एस. एलियट ने, आप टेक्स्ट पे फोकस करते हैं, एक्सटर्नल सारे एविडेंसेस को छोड़ देते हैं। ठीक है, वहां पे हेरेसी ऑफ पैराफ्रेज टर्म कॉइन किया था क्लिंथ ब्रुक्स ने। हेरेसी ऑफ पैराफ्रेज क्या होता है, पोइट्री को पैराफ्रेज नहीं कर सकते। उसके रीजंस है क्यों, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट बेस्ड मीनिंग होती है। हमने इसके बारे में डिस्कस किया है क्लासरूम के अंदर। ये वेल रॉट अर्न क्या आया था, अंदर आया था। इसका पब्लिशिंग ईयर आपको बताना, जानते हैं ये टेक्स्ट, ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में। टेक्स्ट का नाम क्लिंथ ब्रुक्स के दूसरे वर्क्स लाइक आर.पी. वॉरेन के साथ अंडरस्टैंडिंग पोइट्री, अंडरस्टैंडिंग फिक्शन आपके एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो इसका पब्लिशिंग ईयर आपको बताना है। दूसरा रोला बार्थ, आपको याद होगा ये ब्रिज है बिटवीन स्ट्रक्चरलिज्म एंड पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म। हमने डिस्कस किया था कि कैसे इनके कुछ एलिमेंट्स जो हैं वो स्ट्रक्चरलिज्म में आते हैं, कुछ टर्म्स इनके पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म में आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जब हम क्लास में डिस्कस कर रहे थे 5 कोड्स, सिमियोटिक कोड्स, हेर्मेन्यूटिक कोड, एक्शन कोड, प्रोलिटिक कोड, कल्चरल कोड, वो सब हमारा S/Z में आया था, जो कि एक स्ट्रक्चरलिज्म का टेक्स्ट है। मीनिंग मेकिंग हम पहुंचने की कोशिश करते हैं। वाइल ऑन द अदर हैंड डेथ ऑफ एन ऑथर, प्लेजर ऑफ द टेक्स्ट, ये कुछ पोस्ट स्ट्रक्चरिस्ट टेक्स्ट है रोला बार्थ के। इसका पब्लिशिंग ईयर आपसे पूछा जा रहा है। सैंड्रा गिलबर्ट एंड सूजन गुबर के इस टेक्स्ट में मैड वुमन इन द एटिक, जिसमें हम जेन आयर जैसे टेक्स्ट को देखते हैं, इसी में हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था एंजाइटी ऑफ ऑथरशिप। एंजाइटी ऑफ ऑथरशिप जो कि एक जो ओडिपस मॉडल है एंजाइटी ऑफ इन्फ्लुएंस का, उसके अगेंस्ट मॉडल दिया सैंड्रा गिलबर्ट और सूजन गुबर ने कि वुमेन राइटर्स के साथ क्या प्रॉब्लम है कि दे हैव नो
precursor writer. So the act of writing itself becomes act of process of anxiety. उसके बारे में इस टेक्स्ट के अंदर, चैप्टर के अंदर सुजन गिलबर्ट एंड गोबर डिस्कस करती हैं. तो इंपॉर्टेंट है. तो ये कब पब्लिश हुआ, ये ईयर भी आपको जान लेना चाहिए. और प्लीज सर ऐड को बीच में नहीं डाला करिए, एटलीस्ट लाइव लेक्चर में नहीं. मैं नहीं डालता हूँ, वो यूट्यूब का पॉलिसी है, मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें. फोर्थ, मार्क्सिज्म एंड लिटरेचर. रेमंड विलियम्स ने जो आइडिया था बेस एंड सुपरस्ट्रक्चर का, कि बेस डिटरमाइंस सुपरस्ट्रक्चर, रेमंड विलियम्स ने यहाँ बताया कि नहीं, सुपरस्ट्रक्चर आल्सो डिटरमाइंस अवर बेस, और स्ट्रक्चर ऑफ फीलिंग टर्म भी यहीं पे कॉइन किया था. तो 4 इंपॉर्टेंट टेक्स्ट हैं जहां से अलग अलग तरह के टर्म्स को कॉइन किया गया है. इसलिए पब्लिशिंग ईयर जानना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. Who can tell me the right answer here? Anyone would like to tell me the right answer? I will give you 30 seconds to answer this. This is the last question for today. We'll continue this discussion tomorrow as well, but hopefully you'll be able to answer this question. I'm telling you, all these critics are very important. I can give you the name of the critics from every theory. In our next class, we can talk about literary theory, and I can give you the name of writers, the list that you can focus on. 20 texts at least, जहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिल सकते हैं. पब्लिशिंग ईयर से कौन सा टर्म कॉइन हुआ है, वहाँ पे ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है. चलिए, हमारे पास आंसर आ गया है, तो आगे बढ़ते हैं. सही आंसर है द वेल रॉट अर्न 47 में आया था, मैंने आपको बताया, जहां पे हेरेसी ऑफ पैराफ्रेज का टर्म कॉइन किया गया था. प्लेजर ऑफ टेक्स्ट 73 में आया, उसके पहले डेथ ऑफ एन ऑथर 67 में आया. दोनों ईयर का पब्लिशिंग ईयर जानना आपके लिए जरूरी है. भारत का जो शिफ्ट है स्ट्रक्चरलिज्म से पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म में, वो इन्हीं 2 टेक्स्ट के में होता है. मैड वुमेन इन द एटिक, जहां पे एंजाइटी ऑफ ऑथरशिप का कॉन्सेप्ट दिया, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है. फेमिनिस्ट लिटरेचर से मैड वुमेन इन द एटिक, गिलबर्ट एंड गोबर का जो 79 में आता है, और 77 में रेमंड विलियम्स का मार्क्सिज्म एंड लिटरेचर आता है, जहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ फीलिंग आप पढ़ते हैं और बेस एंड सुपरस्ट्रक्चर मॉडल का रिवर्सल होते हुए आप देखते हैं. तो 4 इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है लिटरेरी थ्योरी से रिलेटेड, जहाँ से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं. आई विल स्टॉप हियर. विल मीट टुमारो एंड विल कंटिन्यू विद सॉल्विंग few MCQs from here. So please join here. Right, if you have not subscribed the channel, please do that. We'll be meeting, we'll be solving few MCQs here, we'll be preparing for CUET. I'll be giving you some important things around these questions, and I expect that you will be reading those things as well. So let's stop here. We'll meet tomorrow and we'll continue our discussion. Thank you so much.